Namaste and welcome to this exciting episode of Sattology, debunking mythology. Sattology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. Thank you all the viewers for joining us and making our channel a very successful one. But we need to do much more than that. Our target is to reach 100,000 subscribers by this year end and then further. And also for all the appreciation that I receive and also the 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 critics that I receive. I'm thankful for that also. We have added that also into the new programs that we are coming. तो आज ये शो हिंदी में है. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको बहुत बहुत मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे शो पे आके हमारे शो को 75,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया. अभी हमको 1 लाख तक पहुंचना है December 31 से पहले. वो मेरे लिए अच्छा न्यू ईयर गिफ्ट भी होगा. और फॉर दुनिया के लिए हम लोग अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं. मोस्ट द एनालिटिकल कंटेंट यू गेट हियर यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स ऑन द इंटरनेट. सो लेट अस वेलकम आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे. आप सब जानते हैं हमारे चैनल पे आ चुके हैं दृष्टिकोण के एडिटर देश कपूर. नमस्ते. नमस्ते. वेलकम टू द शो देश कपूर जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. मैं हमेशा बहुत इंजॉय करता हूँ यहाँ आके आपके शो में. हमेशा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है मेरा. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी अगेन. वेलकम. आदित्य जी. सो देश कपूर जी, I was really impressed by the last show we did for the 5 and एक सेपरेट प्लेलिस्ट बन रहा है द 5 का. हमारे जो 5 पांडव के जो सेवक हैं उनका, देश कपूर जी, शरद मोहन जी, विभूति झा जी, माई सेल्फ, उत्सव. तो जरूर वो प्लेलिस्ट भी आप लोग देखिएगा पूरा. उसमें हमारे सारे शोज एक साथ हैं जिसपे हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स को उठाते हैं और इंडियन अमेरिकन पर्सपेक्टिव देते हैं, या फिर जो हिंदू अमेरिकन पर्सपेक्टिव बोल सकते हैं, या फिर धार्मिक अमेरिका पर्सपेक्टिव. तीनों वर्ड्स में से कुछ भी चूज करके लगा सकते हैं वहाँ पे. है ना, हम सभी अमेरिकन हैं और साथ में हम सनातन धर्म का पालन भी करते हैं अमेरिका में रह के. तो आज के शो में हम लोग अपना जो आपने एक बात बोली थी, तीसरा विश्व युद्ध तो शुरू हो चुका है. एंड दैट रियली हिट मी ओवर देयर. मैंने कहा ये तो किसी ने भी बोला नहीं अभी तक देश कपूर जी के अलावा. मतलब मैंने नहीं सुना, जबकि मैं बहुत सारे वीडियोस देखने की कोशिश करता हूँ और कहीं पे भी ऐसा हुआ नहीं. तो दैट स्ट्रक मी एंड आई थॉट कि इस पे हम थोड़ा डिटेल में बात करें इस शो में कि तीसरा विश्व युद्ध आप कैसे समझते हैं कि शुरू हो चुका है. देखिए, ऐसा है कि हर युद्ध एक जैसा नहीं होता. सारे युद्ध जो है अलग अलग तरीके से लड़े जाते हैं. ये जो पहले 2 युद्ध थे वो ऐसा नहीं कि हर दिन वहाँ एटम बम गिर रहे थे या हर दिन बम एक दूसरे पर मार रहे थे. उनकी लड़ाइयाँ धीरे 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 चलती थी. बट द पॉइंट इज कि वो युद्ध जब शुरू हुआ वो पहले तो ऊपर गया, पहले बहुत डीप हुआ, फिर उसके बाद वो एंड हुआ जब वो एटॉमिक बॉम्ब का हुआ अटैक जापान पे. द थिंग इज वी हैव टू सी कि आज जहां हम पहुंचे हैं, जो हमास ने जो एक्शन लिया इसराइल में, और उससे पहले जो कोविड टाइम में जो कुछ हुआ, वो किसी युद्ध से कम नहीं था. उसको हम युद्ध मानते नहीं है इसलिए क्योंकि ये बहुत ही सफाई से किया गया था. एटलीस्ट कोविड बहुत सफाई से किया गया. उसमें ये था कि वो एक तरह का एक मैं तो उसको बायो वॉर बोलता हूँ. दैट्स हाउ इट वाज एक्चुअली. बट इट वाज प्रिसीडेड बाय अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एंड combined with a whole lot of other things in the sense of the media management, management of the politics, and the world organizations like WHO, UN, and all those things, कि उसका फॉल आउट कम से कम हो सके उस पे जो परपेट्रेटर था, जिन्होंने ये किया था. बट हमास में, बिकॉज दे हैड ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेटेड all the universities and media organizations and intellectual intelligentsia, all these sections. That is why हमास का युद्ध जो है, जो हमास का जो अटैक था, that was so brazen. Because think about it, इसराइल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग और स्टेट माना जाता है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री.
right? It is in middle of like a whole lot of adversaries around it. उसका जो मोसाद जो है, जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज नोन टू बी probably the best, and it is very very competent. And they वो कहते हैं कि अगर कहते थे कि अगर किसी के दिमाग में कुछ आया भी है अगर इसराइल के खिलाफ, तो मोसाद को पता चल जाता था। ऐसे लेजेंड था उसके बारे में। और हुआ ये कि 1,000 से ज़्यादा हमास के लोग अंदर घुसे, 5,000 या 7,000 रॉकेट्स उन्होंने दागे, और इसराइल को पता ही नहीं चला। मोसाद को बिल्कुल या कानो कान खबर ही नहीं हुई। और ये हो कैसे गया? मतलब बहुत कुछ उससे पहले हुआ, बट द पॉइंट वाज कि इसके पीछे ये जो सारा कारनामा था, दिस वाज नॉट डन बाय जस्ट अ नॉन स्टेट एक्टर एज हमास। इट हैड अ लॉट ऑफ स्टेट स्पॉन्सरशिप एंड स्टेट बैकिंग। जब वो स्टेट बैकिंग जब लोग देख रहे हैं, नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग इट्स नॉट जस्ट ईरान, इट मे एक्चुअली बी चाइना, बिकॉज जो उनके रॉकेट्स हैं, उसका जो स्टील पाइप्स हैं, दे एक्चुअली केम फ्रॉम चाइना. The kind of intelligence that Hamas used against Israel, about Israel, that would not have been available only to Iran. That would have come from somewhere else. And if you really look at things now, the infiltration of the the ideology that or the divide that China and Russia were trying to sponsor or put forth within the US and within the West is now being used within this war. वो इस तरह से कि हमने इतने ये पिछले एक हफ्ते के अंदर, एक डेढ़ हफ्ते में बड़ी क्लियरली देखा है कि कैसे यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में एजिटेशन और प्रोटेस्ट हो रहे हैं अगेंस्ट इसराइल, and they are, in some of the protests, they are actually asking for genocide of Israelis very openly. Means एक तो ये है कि इस पूरे कांड का जो अटैक हुआ जो हमास का, उसकी बैकिंग इंटरनली विद इन द वेस्ट एंड इवन विद इन the Jewish community, like within the West, has grown quite a lot. But that is just one aspect of it. The other aspect is that this country and the West itself has been broken right down in the middle, because there are a whole lot of people, excuse me, who are for Israel, but then there is a whole lot of population जो कि वो हमास का साथ दे रही है, और बहुत स्ट्रांगली दे रही है, और इसराइल और ज्यूज के खिलाफ दे रही है। तो ये सोचने की जरूरत है कि इसका इसका लॉजिकल एंड क्या होगा। इसका लॉजिकल एंड ये होगा कि धीरे धीरे there will be, the divide is increasing within the West. The appetite to actually back Israel will go down like after some time. But Israel is in a very very strange situation right now, because जो कुछ भी उन्होंने बिल्ड किया था, जो भी उन्होंने लेजेंड्स बिल्ड किए थे, जो स्टोरीज बिल्ड हुई थी, जो उनकी स्ट्रेंथ बिल्ड हुई थी, वो तो सारी धरी की धरी आ गई। हाउ कुड दे हैव मिस्ड सो मच इन टर्म्स ऑफ मोसाद? सो अगर मोसाद को अगर वापस अपनी इमेज बनानी है, अगर इसराइल को वापस अपनी इमेज बनानी है, या नेतन्याहू को, हु वाज नोन एज अ स्ट्रांग मैन एंड राइट ऑफ सेंटर, उनको अगर अपनी इमेज बनानी है, they have to do something extremely decisive against the enemy will not be good enough, because enemy उनके सामने है ही नहीं, enemy कहीं और बैठा है। और यही चीज कोविड में हुई थी। हम लड़ किससे रहे हैं? कोविड में हम किससे लड़ रहे थे? क्योंकि एनिमी तो कहीं और था। और दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एंटायर ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ द वॉर दैट वी आर फाइटिंग। मेरा मेरा ये कहना था सम टाइम बैक, और मैं ये मेंटेन करता हूँ अभी भी, द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल नॉट बी फॉट बिटवीन नेशंस, इट विल बी फॉट इन द स्ट्रीट्स ऑफ एंटायर वेस्टर्न हेमिस्फेयर।
It will be fought in the on the streets of US and entire Europe. And that is the sad part, because at some point when this entire war is being fought on the streets, at some point someone will realize that something terribly wrong has happened within their society. उस समय this war will become even larger, because ये जो है इसराइल का the fight against Iran and US's fight against China. Now this started like sometime back in the right awareness, because बहुत लोग शायद नहीं जानते होंगे. Last year Right. there was a semiconductor की जो इंडस्ट्री है चाइना की, वो ऑलमोस्ट ओवरनाइट यूएस ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी विद पॉलिसी दैट दे केम आउट विद कि कोई भी अमेरिकन सिटीजन चाइनीज सेमीकंडक्टर कंपनीज में काम नहीं कर सकता. दैट मींस ऑल द चाइनीज अमेरिकन हु वर वर्किंग विद देम either had to leave their own like citizenship or leave the company. मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, क्या MS-370 का जो गायब हुआ था, क्या वो भी इसी षड्यंत्र का पार्ट था कुछ? Well, that I don't know, because it could very well be. क्योंकि Because उधर भी 21 चाइनीज साइंटिस्ट थे उस प्लेन में, हाँ, और बीजिंग जा रहे थे वो. right. So that could also be possible. क्योंकि ये see the thing is, वो जो सेमीकंडक्टर का जो था ना, वो सिर्फ लास्ट ईयर ही नहीं हुआ अक्टूबर में, वो लास्ट ईयर अक्टूबर वो चलता रहा. अगस्त में भी एक उन्होंने पॉलिसी बनाई, देन फिर दोबारा लाइक यूएस ने एक और पॉलिसी निकाली है जिसमें इवन फॉरेन सब्सिडरीज जो हैं वो भी चाइनीज कंपनी को सप्लाई नहीं कर सकती. और सिर्फ ये यूएस की पॉलिसीज हैं. दूसरी तरफ से जो चाइना की जो पॉलिसीज हैं वो ये हो गया कि ग्रेफाइट और जर्मेनियम और बाकी रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं जिनके ऊपर उनका कब्जा है, विच आर बीइंग यूज्ड फॉर सेमीकंडक्टर्स, नाउ दे आर स्टॉपिंग, they are banning the export of all that. So that means US is stopping the technology to go to China. China is stopping the raw material to come to US. So there is that kind of war that is going on, and that is why Taiwan becomes so very important for both. Now, शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो, but just today itself, like probably yesterday, actually yesterday, there was a very close encounter between USS Ralph Johnson, जो warship है, in the South China Sea with a Chinese warship. Actually, they were very close, and suddenly the US warship accelerated, and they were really stunned. So that is one thing that happened. On the other side, the Beijing जो Chinese warplanes हैं, they have been actually doing a lot of aggressive maneuvers against the US warplanes. So any mistake on any one side could be very, very, very fatal for the world. But that is what is going on right now. And मैंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ रख दी हैं. There are some other things that are there. What is happening within China itself, how Xi Jinping has been orchestrating the politics within China, and that he has been doing in a very decisive manner that many people have not really understood, because चाइना के अंदर क्या होता है उसके बारे में बहुत मुश्किल होता है जानना. अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें वो समझ में आएगा कि what has Xi Jinping been doing in the last 2 years specifically. Like I would go back to that point where वो अलीबाबा का जो फाउंडर था जैक मा, जब उसको सडनली डिसअपियर कर दिया था. Why did that happen? And then like what happened last year with Hu Jintao. So all these things are all related to the power struggle that is going on in China to make it a country and a polity that is strong enough or is unilateral enough to do what Xi Jinping actually wants to do. So there are a lot of things happening in that way. I would say, okay, in all practical purposes, if you really look at
the actions going on, the severity of the actions, and the finality of the actions, वो they are quite dangerous. मतलब कोविड में तो फिर भी वो बाहर नहीं आए, पर हमास में के अटैक में तो उन्होंने ओपनली टॉन्ट कर दिया है. मतलब दिस इज लाइक अ टर्मिनल लाइक एक्ट, लाइक देयर इज नो गोइंग बैक फ्रॉम हियर. अमेरिका ने ओवरवेलमिंग फोर्स को भी डिप्लॉय किया है इस एरिया में. दूसरा, एक मैं अभी देख रहा था रिपोर्ट, रिडैक्टेड का रिपोर्ट था. आई डोंट नो हाउ इट इज ट्रू, हाउ ट्रू इट इज, आई डोंट नो दैट. लेकिन एक प्लान भी चल रहा है कि केमिकल अटैक करने का. एक फ्रेमवर्क चल रहा है कि टनल्स में केमिकल्स भर दिए जाए हर तरफ से, एंड देन सी हाउ इट गोज. आई मीन, ये तो लॉजिकल स्टेप भी लगेगा कि टनल है तो वहां पे लिक्विड एंड कैन गो एनीवेयर. तो वो भी चल रहा है. तो मतलब इसराइल जो गैस से मतलब होलोकास्ट हुआ, और अभी वो गैस को यूज भी करना चाहते हैं. दैट्स ए वेरी आयरॉनिकल सिचुएशन आल्सो. और दूसरा तीसरा है कि ऑन द साइड ऑफ द हमास, इफ यू सी, कि हमास ने भी अपने अटैक्स बंद नहीं किए हैं. एंड दे आर वर्किंग फ्रॉम विद इन द सिविलियन, अंडर द सिविलियन बिल्डिंग्स. और एक फेक आउट क्राई हम देख रहे हैं पीस का. तो इन द वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स आर अलाउड टू सिमर. मतलब दुनिया शांति चाहती है, लेकिन दुनिया शांति नहीं भी चाहती. तो लोग शांति की सिर्फ बात करते हैं, लेकिन इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट इज केप्ट अलाइव, कश्मीर इज केप्ट अलाइव, कोरियन कॉन्फ्लिक्ट इज केप्ट अलाइव, ताइवान कॉन्फ्लिक्ट इज केप्ट अलाइव, है ना. और यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट तो रशिया ने खत्म कर दिया. अभी इतना बॉम्बार्डमेंट किया है कि अभी यूक्रेन और पूरा नेटो ही डर के बैठा हुआ है कि दे कैन नॉट फाइट कलेक्टिवली. अमेरिका राइट. भी नहीं फाइट कर सकता. अब दादागिरी उठाने की बात आई है इजराइल पैलेस्टाइन. वेरी कन्वीनियंट वे टू फॉरगेट द यूक्रेन लॉस. ये वेस्ट का रिपीटेड मोडस ऑपरेंडी है. एक कॉन्फ्लिक्ट को खत्म ना करो तब तक दूसरा शुरू कर दो, फिर दूसरे को भी खत्म ना करो तीसरा शुरू कर दो. सो व्हाट इज द अल्टीमेट गेम प्लान? और इस पे थोड़ा कमेंट करिए कि दुनिया, व्हाई एवरीवन वांट्स, अभी सडनली द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रेसर एंड डिफेंडर इज कंप्लीटली गॉन नाउ. एंड द कॉन्फ्लिक्ट में पीस नहीं घुस चुके हैं. एंड द लीडिंग अमेरिकन वॉइसेस आर टॉकिंग अबाउट पीस नाउ. जेफरी सैक्स एंड कर्नल डगलस मैकग्रेगर, ये सभी लोग बात कर रहे हैं. ये तो एक्सट्रीम राइट के लोग हैं, और राइट. एक्सट्रीम लेफ्ट के लोग भी पीस की बात कर रहे हैं. उसमें हमारे वेरी खास में लोग भी बात कर रहे हैं, इलान उमर, रशीद तलेब. तो सो टेल मी व्हाई दिस कॉन्फ्लिक्ट्स आर अलाउड टू पेस्टर. और अगर वर्ल्ड वॉर चाहते भी नहीं है, लेकिन वॉर भी चाहते हैं बिकॉज इट हेल्प समबडी. व्हाट इज योर ओपिनियन? सो प्लेटो ने जो ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था ओनली द डेड हैव सीन द एंड ऑफ वॉर. Those who are alive, for them war will always continue, and that is the truth. Because see what is, ये जो लोग पीस के बारे में बात करते हैं ना, जब वॉर आपके सामने है, जब एनिमी आपके सामने है और अटैक इतना भयंकर हो रहा है, तो उसका मतलब दे हैव बीन कोऑप्टेड बाय योर एनिमी. बिकॉज एट दिस टाइम, to confuse between what is going on and what should be your action is in itself uh, treacherous for your own self. मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल था ये, दैट वाज अबाउट ड्यूरिंग द पार्टीशन टाइम. मैं वो कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी अबाउट दिस वॉर एंड पीस वाला जो सिचुएशन है, अच्छाई और बुराई के बारे में. एक सेठ कल्याण दास होते थे, वो मुल्तान में होते थे. एक डेरा इस्माइल खान एक और जगह है जहाँ पर उनका एक और घर होता था. उस घर में डेरा इस्माइल खान के पास में इंदस का एक ट्रिब्यूटरी जाती थी, छोटी सी नहर निकलती थी, और वहाँ पानी होता था. लोग आते थे, वो बहुत बड़े जलसे करते थे उसमें. तो जब गर्मियों का टाइम होता था तो वृंदावन से रास लीला करने के लिए वहाँ लोग आया करते थे. वो बड़े बड़े इवेंट्स करते थे जिसमें कचौरी, हलवा, पूरियाँ बनती थी और लोगों को दी जाती थी. बहुत सारे लोग आके बड़ा कुछ करते थे वहाँ, रास लीला देखते थे, बहुत एंजॉय करते थे. उनके साहूकार, उनके जो दोस्त होते थे और जो उनके बिजनेस पार्टनर्स होते थे, वो भी वहाँ बहुत आते थे. तो ही वॉज वेरी वेल कनेक्टेड. उनका ये स्टैचर था कि इवन मुस्लिम्स उनके पास आते थे और उनसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराते थे.
जब ये सारे दंगे फसाद शुरू हुए, मार्च 4 की बात है 1947, जब वो अपने मुल्तान के बंगले में थे, उनके साथ कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर सैफुद्दीन किचलू भी थे। तो जब मॉब आया उनके घर के सामने, तो उन्होंने कहा, उनको इतना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि उन्होंने कहा इनको तो मैं रिजॉल्व करा दूंगा, कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। वो नीचे गए ये सोच के कि मैं इनको बोलूंगा कि यहाँ से आप चले जाओ, उनकी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व कर दूंगा और फिर मैं आ जाऊंगा वापस। वो जैसे नीचे गए, उस मॉब ने पहले तो उनको मारा, उनके टुकड़े टुकड़े किए, उनके दरवाजे पे फेंके और फिर ऊपर गए और उनके बच्चों को और उनकी बीवी को मारा। और फिर सैफुद्दीन किचलू को बाहर निकाला उन्होंने, उनको उनके कपड़े उतारे, तब उनको पता चला कि यू नो ही इज़ अ मुस्लिम। सो उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम को आप नहीं मार सकते, ये इस्लाम के खिलाफ है, तो इसलिए उनको मार पीट के छोड़ दिया गया। मैं अक्सर ये सोचता रहा जब मैं वो कहानी वो कहानी पढ़ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया व्हेन ही वाज सो वेल कनेक्टेड टू द एंटायर political elite of that time, when he had so much of money, when he was trying to do so much of good. How did he lose sight of the terminal and existential danger that was right in front of him, that was going to happen? Why did he not invest in his own group of security guards and security militia that he should have to save himself when things went wrong? उनका उनकी अच्छाई हलवा कचौरी पूरी तक की क्यों रहेगी? Why couldn't his achai also look for security for his own people and for everyone else? जिस कल्चर के लिए वो वृंदावन से रास करने वाले लोगों को लाते थे, उस कल्चर के लिए उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं उसको बचाने के लिए? सिर्फ हलवा पूरी और कचौरी से उन्होंने उनको ये लगा कि ये कल्चर बच जाएगा? कभी ऐसा हुआ है आज तक? All the people who want to look for good in other people, that is great. But always remember that when the ugly in the other person comes knocking at your door, you have an answer. You have a way to handle that ugliness. Because the people out there will do everything for the power to mobilize people who are gullible and who are going to do things which they may not do otherwise, because mobs जो हैं वो अच्छाई बुराई नहीं देखते, वो they just deal in very clear black and white kind of situations. So problem यही है, you know, when Israelis are fighting the Hamas is using Palestinians as their cover. Then at that time, and Palestinians are either complicit or weak enough to actually fight, against the Hamas. But all these people who are actually saying that, like Israel is at wrong because they are bombing the Hamas right now, they or Palestine right now, they are actually trying to back Hamas and their entire objectives. दिस विल, ये जो सारा पीस का है ना, इस समय जब औरतों को रेप करके, उनकी डेड बॉडी के साथ रेप करके, बच्चों को बिहेड करके, आप ये देखिए कि क्राइम करना एक बात है, इस तरह का क्राइम करना जिस तरह का हमास ने किया और उसको वीडियोग्राफ किया और उसको लाइव दिखाया, दैट हैड अ ऑब्जेक्टिव. That objective you need to understand, because that objective was to taunt Israel and taunt Mossad and taunt the IDF that हम ये कर सकते हैं and we want to humiliate you in such a manner that you will always remember. You know, वॉर करना एक बात होता है, अपने एनिमी को ह्यूमिलिएट करना एक और बात होता है. जब लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया का जो इन्होंने हाल किया पाकिस्तानीज ने ड्यूरिंग कारगिल वॉर, दैट वाज नॉट जस्ट वॉर, दैट वाज ह्यूमिलिएशन ऑफ द इंडियन आर्मी, दैट वाज ह्यूमिलिएशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ. They taunted India.
दे टॉन्टेड द इंडियन आर्मी दैट यू कांट डू एनीथिंग, और हम तुम्हें ह्यूमिलिएट करेंगे, तुम्हारे लोगों को इस तरीके से मारेंगे जिस तरह से लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को मारा। ये एक तरह का मैसेज होता है that they want to actually push the other person, push all the buttons of the other person to do certain things in the most rash and strong manner. That is what they wanted Israel to do, and Israel thankfully has not done all the things that they could have done. They are actually attacking Palestine, which and Hamas, which is being going to be used like further, but they know, Israel knows like where their like enemy are, and either they can rush to fight that, or they can make their own time, own plan, own strategy and fight them on their own time, जैसे मोदी जी ने किया था, because that is very important. But then the problem with that is it has to be decisive, वरना इनका जो humiliation जो उन्होंने की, जो इन्होंने उनकी पूरी इमेज मिट्टी में मिला दी, और जो कुछ भी उन्होंने किया लाइक इजराइलीज के साथ, that will leave them vulnerable in a very 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 bad way, very bad way, because like now there is no, उनका fear नहीं रहा, and that is very dangerous. इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं बेनेट नफ्ताली, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इंडिया के अपोजिशन लीडर्स को भी समझना चाहिए। सब लोग इजराइल कॉपी करना चाहते हैं, और लेकिन एक्चुअली कांग्रेस पार्टी तो नहीं करना चाहती। कांग्रेस पार्टी तो हमास को कॉपी करेगी। लेकिन अ, उन्होंने बोला, अभी इस समय ही केम ऑन पियर्स मॉर्गन शो, Hmm. और उन्होंने पियर्स मॉर्गन ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा कि आप तो अपोज करते हैं नफ्ताली, आप तो नेतन्याहू की बहुत अपोजिशन में है, Hmm. आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला, मैं इस समय वॉर टाइम है, मैं चाहे वो मेरे अपोजिशन पॉलिटिकल हो, मैं अपने घर की बातें दूसरे फॉरेन चैनल्स में नहीं बोलता हूँ। उन्होंने बोला ही। Hmm. दूसरा बोला कि अभी मैं भी स्वयं लड़ने के लिए उतर चुका हूँ। एंड Hmm. ही गेव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरव्यूज टू एवरी चैनल, मेरा नफ्ताली, Hmm. वेयर हाउ ही सपोर्टेड। और उन्होंने जो प्रॉब्लम बताए उससे इंडियंस काफी रिलेट करेंगे। पाकिस्तान का भी वही एग्जाम्पल है। Hmm. पाकिस्तान, मतलब अगर अभी हम लोग तो अपने चैनल पे खुल के बोल सकते हैं, एज एन अमेरिकन चैनल बोल सकते हैं कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम है मुसलमान वर्सेस हिंदू, उनको हिंदू धर्म से चिढ़। अपने देश में भी हिंदुओं का क्या हालत करते हैं, ये क्लियर है एकदम। तो पाकिस्तान को हम लोग पाकिस्तान नेशन नहीं देखना चाहिए, उनको बोलने जिहादी स्टेट है वो। ही हेट, दे हेट मुस्लिम, दैट इज अ पीरियड। और भारत के Hmm. कुछ मुसलमान भी सपोर्ट करते हैं, वो बात अलग है, वो इंटरनल बात है भारत की, उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन द थिंग इज, दिस इज अ वेरी क्लियर सिनेरियो। तो इंडिया इज ऑल्सो फेसिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इन अ वे, Hmm. Hmm. बिकॉज दीज पीपल आर डिटरमाइंड। और Hmm. कल को टर्की भी इनके साथ आएगा, कल को जो एक्टर्स अभी हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारे भारत के विरुद्ध आने वाले हैं। Hmm. तो जितना भी हमें पप्पी झप्पी कर लें, कितना भी गले लगा लें, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, है ना? Hmm. ये दिस इज द डिफॉल्ट। और वेस्ट भी उस समय भारत के विरोधी एक्ट करेगा। क्या आपको Hmm. ऐसा लगता है कि भारत आज के समय में ये पूरी गेम्स को देख सकता है? बिकॉज चाइना इज गोइंग टू सपोर्ट देम इन एनी वे, उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो इट्स अ वेरी पावरफुल फोर्स टू फाइट अगेंस्ट इंडिया। तो ये जो वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहे हैं, इज इंडिया पार्ट ऑफ इट? इज इंडिया प्रिपेयर्ड, और इंडिया कैन टेक केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम? That's a very good question. मैं लाइक आजकल जो हालत है पाकिस्तान की, जब मैं उसको देखता हूँ तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि 2010, पाकिस्तान ऑफ 2010, पाकिस्तान ऑफ 2023, व्हाट इज द डिफरेंस? अब पाकिस्तान ऑफ 2013 एंड पाकिस्तान ऑफ 2023, व्हाट इज द डिफरेंस? देयर इज नो डिफरेंस विद इन पाकिस्तान, बिकॉज इफ यू रियली लुक एट इट, उनके एक्सपोर्ट्स ऐसा तो नहीं है कि सडनली एकदम गायब हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। उनके इम्पोर्ट्स ऐसा तो नहीं है कि सडनली बहुत बढ़ गए हैं, ऐसा भी नहीं हुआ। पहले भी ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं, घटी हैं, सब कुछ हुआ है। आज ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान बिल्कुल भीख मांगने की कगार पे आ खड़ा हुआ है, जो पहले नहीं था। पहले भी उनके ग्रांट्स, उनके पैसे यूएस ने बंद किए थे काफ़ी देर से। आज ऐसा क्या हुआ है, ये जानना ज़रूरी है, बिकॉज
The thing is, so this is my view. I believe India was so compromised, so heavily and desperately compromised that Indian economy was actually paying for Pakistan as well. भारतीय जो है भारत को ही नहीं पाल रहे थे, भारतीय इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी पाल रही थी इतने साल। जब मोदी जी आए, डीमोनेटाइजेशन से शुरू करके जो आज तक जो कुछ किया है, उन्होंने वो सारे लीकेजेस, सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे वो कंप्लीटली बंद हो गए हैं या चीज़ें क्राइम उनका करना बंद हो गया, ऐसा नहीं हुआ। बट a majority of that has been closed. That is why Pakistan really does not have a way forward. Otherwise, they were in such a situation that they could actually get a lot of leakage out of India itself. For example, सिर्फ हवाला मार्केट ही $14 बिलियन की मार्केट थी, जो इंडिया से, दिस इज वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट, बट इंडिया के जो फेक करेंसी जो पूरा उनका व्यापार चलता था, that used to give them a profit of 500 crores every year. This is just a conservative estimate. क्योंकि अगर हम देखें हालत क्या हो गई थी, हम अपना करेंसी के नोट्स जो थे वो डेलारू से लेते थे। डेलारू हैड अ जॉइंट वेंचर विद द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक जो है उनका, सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान सिंस 1950। जिस कंपनी का जॉइंट वेंचर था पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के साथ, उनसे हम अपने नोट के पेपर लिया करते थे। ये हालत थी हमारी। एंड दे यूज्ड टू टेक द सेम पेपर दैट इंडिया यूज्ड टू टेक in more quantity than India used to buy from them. That means they could actually make more of our currency than India was making its own currency. हमारी हालत इतनी खराब हो चुकी थी क्योंकि 2010 में मुझे याद है अच्छे से, there was a raid on the Indo-Nepal border. ये जो बैंक ब्रांचेस हैं पब्लिक बैंक की, स्टेट बैंक एंड पीएनबी टाइप्स, उनके वहाँ फेक करेंसी नोट पाए गए। तो उनको ये लगा, पहला ऑब्वियसली जो शक था ये क्या कि आईएसआई ने वहाँ डाले होंगे। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया सीबीआई ने, तो पता चला वो आरबीआई के वॉल्ट से आए थे, विच मेंट इंडिया का जो सेंट्रल बैंक था वो ही फेक करेंसी नोट्स दिए जा रहा था बाहर। दैट मीन्स हमारी जो अपनी सेंट्रल बैंक की जो वॉल्ट्स हैं, दे वर कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज्ड। इंडिया की हालत यहाँ तक आ चुकी थी, पता है, जब ये मोदी जी आए। दैट इज वाई डीमोनेटाइजेशन वाज सो इम्पोर्टेंट। दैट इज वाई even the higher ups, the highest ups of the RBI were not taken into confidence, because entire RBI was actually compromised at that time. उस सिचुएशन में जहां पर आपकी पूरी इकोनॉमी कॉम्प्रोमाइज है, जहां पर आपके मिनिस्टर्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जहां के आपके जो प्राइम मिनिस्टर्स थे वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके थे, वो इकोनॉमी जो है, जब वो वाली एस्टेब्लिशमेंट जब हारी और नई एस्टेब्लिशमेंट आई जिसने इन सबको बंद किया, इन सब लीकेजेस को, तो आप क्या समझते हो कि ये फाइट जो अभी इंडिया की जो पॉलिटिकल जो ऑपोजिशन है और जो पॉलिटिकल जो स्पेक्ट्रम है, लाइक इज इट बिटवीन one party and another party? No, it is between India and Pakistan. They were co-opted out. ऐसे ही थोड़ी इतना ज्यादा अंदर तक वो घुस चुके थे, ऐसे ही इंडिया सिर्फ थोड़ी पाल रहा था उनको। इन लेट 1980s केजीबी के एक बहुत बड़े वो थे, ऑफिसर थे, डायरेक्टरेट लेवल के। he had said India is on fire sale. India is on fire sale. Mitrokin archives के papers थे, they have said very clearly that most of Congress and even Indira Gandhi probably were on the KGB payroll. That's what Mitrokin archive paper says. सेमर हर्ष जो यूएस के जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने अबू गरीब और बहुत सारे ऐसे स्कैम्स को बाहर निकाला, एंड ऑल दोस थिंग्स ही केम आउट विद। He had written a book in 1960s or 70s where he said Morarji Desai
was being paid money, $20,000 every year by CIA. He was actually a CIA agent. And Moraji Desai, by the way, sued Seymour Hersh and lost. So मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आप बात कर रहे हो ना कि इजराइल के जो ऑपोजिशन है वो भी उस वॉर टाइम में उनके साथ खड़ी है। हमारे यहाँ ऑपोजिशन तो है ही नहीं। अगर ऑपोजिशन होती तो वो खड़ी होती, अगर वो इंडिया की ऑपोजिशन होती तो खड़ी होती। पर वो तो दे हैव ऑलवेज बीन working along with Pakistan and India's enemies. It is just a matter of fate that India was not completely destroyed and Modi ji came. Otherwise, India would have been in a very, very bad situation because of where it was. So in that sense, अगर हम देखें कि is India ready or not, see all these accords that were done, the Abraham Accords. Now people are saying that those accords may have been actually, you know, like some kind of deceiving, tactics for like putting Israel into a lull. इतने पिछले कुछ सालों में मोदी जी को इजिप्ट ने हु बैक्ड हमास, सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने और बाकी ऐसी कंट्रीज ने, कतार ने भी, they have given their highest national awards, and we thought that was a great thing. I think we should be very careful about those things because that may also have been a tactic. So जो कुछ भी इजराइल के साथ हुआ है उससे हमें बहुत सारी सीख लेने की जरूरत है कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। मेरे हिसाब से आई थिंक वेयर this whole thing about not putting our eggs in US basket or Russia's basket or China's basket or the Middle East basket, I think is a very good thing because uh, till the last moment, I think India is calibrating everything and trying to see who is where and why. Because even in US, what happened when Modi ji came here, the message was very clear. What Obama had done and what how Biden and the other administration was actually inviting him, that all these guys want India but without Modi. That's US. China also like is like doing the same thing. So are other people, except for Russia, Israel, and I think a couple of other countries, like specifically the global south. So like इंडिया के सामने चैलेंज बहुत बड़ा है अगर हम उसको ढंग से देखते नहीं हैं। तो like we can, whatever happened, like in my view, whatever was done in 2611, actually, the ISI was also ट्रेनिंग द हमास पीपल। उनके एक मिनिस्टर ने अभी पीछे बोला था। तो इफ दे वर ट्रेनिंग, दे आर द वंस हु एक्चुअली ट्रेन्ड 2611 में वो कसाब वगैरह सबको। तो इनफैक्ट ये हमास का अटैक मे बी एक्चुअली अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट, नॉट जस्ट a random thing. So they are learning with everything. If they are learning with every attack, then the next attack will be very, very, very decisive. अभी तो उन्होंने अंदर घुस के मारा है और लोगों को लेके गए हैं। यहाँ मुंबई में उन्होंने सिर्फ लोगों को मारा था। नेक्स्ट अटैक विल एक्चुअली बी टू टेक ओवर द एंटायर सिटी और एंटायर स्टेट, एंड दैट विल बी वेरी वेरी डेंजरस। बहुत ही भयंकर वार्निंग दी है आपने एनालिसिस करके लोगों को। एक्चुअली अगर इसको देखें तो G20 वॉज अ लॉलीपॉप टू इंडिया, ऐसा देखा जाए तो, आपके हिसाब से देखा जाए इज लाइक ए लॉलीपॉप कि हम तुम्हारे साथ हैं, बट वी आर प्लानिंग समथिंग वर्स फॉर यू। क्योंकि अमेरिका में अमेरिकन पॉलिटिशियन ने बोला है कि हमारी दोस्ती हमारी दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक है, तो बोला है उन्होंने। तो ये एक है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर तो वी ऑल इंडियन अमेरिकन लव, क्योंकि हम लोगों को वी सी एन एक्सटर्नल साइड ऑफ इट, लेकिन इंटरनली इंडिया में उनका अपोजिशन भी बहुत ज्यादा है। और व्हाट हैज हैपेंड टू हिंदूज इन इंडिया, अभी हिंदूज में एक रोष भी है बहुत ज्यादा, मतलब रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट, इंडियन रूलिंग पार्टी जो भी है। एक मैं इसमें थोड़ा सा और, सो द इंडिया का जो प्रिपरेशन हो रहा है मिलिट्री इज
it in keeping in line with the worst situation जो already वो लोग anticipate कर रहे हैं. Because I have never seen a build up like this in Indian forces. हमारी लाइफ में तो पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया इज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स. मिसाइल्स भी हो रही हैं, नए वॉरशिप्स भी ऐड हो रहे हैं, क्रूज भी इंक्रीज किए जा रहे हैं, आर्मामेंट्स भी इंक्रीज किए जा रहे हैं, और आर्टिलरी हैज सीन फर्स्ट टाइम जस्टिफिकेशन. तेजस भी इंक्लूड हो रहा है. सो लाइक वी हैव सीन ए कंप्लीटली वॉर टाइम प्रिपरेशंस. और दूसरा ओएफबी को भी प्राइवेटाइज करके आर्टिलरी को भी बढ़ाया जा रहा है कि इंडिया को लड़ाई के वक्त कोई भीख ना मांगनी पड़े. नहीं तो क्योंकि इंडिया वाज नॉट एबल टू फाइट इवन ए 7 days वॉर. लोगों को मालूम नहीं है. और अभी भी इतना वीक है 70 साल का नेग्लेक्ट से कि इंडिया कैन नॉट डिफेंड विदाउट फॉरेन हेल्प. एकदम डिपेंडेंट है. और रशिया वॉर में, यूक्रेन वॉर में हम देख चुके हैं किस तरह यूक्रेन which became dependent on the West, lost the war. Right. Russia was dependent on themselves, therefore they're winning the war. So sustainability ज़्यादा है, वो हो सकती है. So now with these situations, is India already preparing for this scenario? आपको क्या लगता है? I think so. I think in the last 8 years, like what has happened, like what Modi ji has done, I think many people have not really fully understood. Because see, G20 जो था ना, like that was to create a cloud within the global south. See, the prosperity of the West is dependent on the plunder that they have done in global South. अभी नाइजर में फ्रांस के साथ जो कुछ हुआ वो सबने देखा. And you know all these things people need to realize कि फ्रांस ने decolonize, उन्होंने colonial masters नहीं रहे अफ्रीकन कंट्रीज के in the overt sense, you know सामने देखने के हिसाब से. But in terms of how they were actually dealing with the African countries, they still were colonial masters because they had the first right to their minerals, to their riches, and those countries like Niger could not actually even invite any other companies until French had not accepted the deal. So ग्लोबल साउथ को अपने साथ रखना, अपने साथ लगाना, स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम कोविड ऑनवर्ड्स टिल नाउ, आई थिंक वाज अ वेरी स्मार्ट मूव बिकॉज नाउ इंडिया हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग चिप अगेंस्ट द वेस्ट, which we didn't have earlier, because like whatever we are doing, that will actually benefit the global south. And because we are doing it in a different way than the Chinese were doing, हम जो हैं इंडिया जो है, that will help the global south even more. तो उसके हिसाब से that was a bargaining chip in my view, like versus the west. So that was the relevance of G20. But more than that, like if you really look at the Indo-Pacific region, कुछ साल पहले मोदी जी वो अंडमान निकोबार गए थे. वहाँ वो फोटो खिंचा रहे थे धोतियाँ पहन के, तो लोग मजाक उड़ा रहे थे उनका. और वो सिर्फ धोतियाँ पहनने के लिए नहीं गए थे वहाँ पर, और फोटो खिंचाने के लिए नहीं गए थे. वो एक्चुअली ही वाज ट्राइंग टू रीइंफोर्स दैट प्लेस एज अ नेवल बेस and add more connectivity and things like that. Why? Because Andaman Nicobar is right on the mouth of Strait of Malacca, from where 80% of all trade of China actually goes through. So if you really look at Strait of Malacca and how India is sitting right on its mouth through Andaman Nicobar, India has a very strong clout against China. Not just that, India actually has uh, created a naval base in the Sabang port hai, like Indonesia, that is also in the mouth of Strait of Malacca. So that's one thing. The other thing is, like people, there were reports which said that India ने जो Mauritius का एक island है वहाँ भी एक naval base बनाया. Then Mozambique and Dukum, इन सब में मोदी जी जब घूम रहे थे मिडिल ईस्ट, जो पहले टाइम में पहले अपने जो था इनका रिजीम जो था, उसके अंदर उन्होंने बहुत ट्रैवल किया मिडिल ईस्ट में. उसका जो
कॉन्सिक्वेंस था, उसका जो रिजल्ट था वो ये था कि ऑल दीज डील्स वर क्रिएटेड। जो कहते हैं ना उनका वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो था चाइना का, उसके लिए एक डायमंड नेकलेस बनाया उसके आसपास। दैट वाज व्हाट इंडिया डिड। सो एंड इन टर्म्स ऑफ our production readiness of the our military forces, that is very very important to understand, because इंडिया का बहुत ही बुरा हाल था। मतलब मुझे खुद याद है कि जब कारगिल की जब वॉर हुई थी जब यहाँ पर, तो कुछ लोगों ने हम पैसे लाइक मिला के लाइक इवन पॉन्चोज, सिंपल पॉन्चोज भेजने पड़े थे, क्योंकि उनके पास पॉन्चो भी नहीं थे कुछ लोगों के पास वहाँ पर। तो हालत ये है कि नाउ ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिक्योरिटी एंड लाइक आर्मामेंट्स का काम नहीं हो रहा। वहाँ की कंपनीज जो हैं, they actually sell body armors and anti-tank like equipment and a lot of other stuff to Latin America and to other countries। फिर ऐसा क्यों था कि इंडियन आर्मी जो है, इंडियन मिलिट्री फोर्सेस, वो इतनी पिछड़ी हुई थी? पर जब ये आए मोदी, ये जब like when we started making our own light machine guns and like simple things which India just didn't have, and getting all the missiles and everything which were required, all the R&D that had gone on. See, the thing is, even the space का जो program है, that is very important to understand. See, the thing is, लोग अक्सर बोलते हैं कि पाकिस्तान के पास आईसीबीएम्स हैं और लाइक आईसीबीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी भी हैं उनके पास जो मिसाइल्स हैं। द थिंग इज कि यू कैनॉट हैव ऑल दीज मिसाइल्स and not have a space program, because the technology is almost the same. It is just that one goes up and one that comes down. So the thing is, if a country has a ballistic missiles but does not have a space program, you should be very clear that that country actually has either bought or stolen from somewhere else. And these missiles were coming from North Korea, which were sent by China, because even North Korea does not have a space program. And so North Korea तो पाकिस्तान को मिसाइल्स दे रहा था। पाकिस्तान उनको क्या दे रहा था? वो उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रहे थे, जो उन्होंने चाइना से ही ली थी। तो ये जो जो कहानी है ऑफ हाउ चाइना वाज यूजिंग बोथ ऑफ देम टू एक्चुअली कॉर्नर इंडिया, दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। बट तो इसका तोड़ नहीं हो रहा था। नाउ आई थिंक वी हैव कम टू अ पॉइंट वेयर India at least has Pakistan in a situation where it just cannot fight for more than even a few days, even a week now. So that is one thing. The other thing is that when China actually started doing Galwan वगैरह में जो कुछ भी उन्होंने करने की कोशिश की, they were actually given back, which had not happened. No army in the world until now has actually given it back to the Chinese except the Indian army. And that is very important, because India, the Indian army, still has that confidence that if there is a fight, we will give it back. The only problem will actually come when they use the internal divisions in India to actually sabotage India and subvert India, and go ahead in the elections and sabotage it, because that is going to happen in a big way. So I hope all the things that we have done in terms of all the things that the Modi government has done, especially in the Northeast, and in terms of the weaponry and the armaments, we will be able to handle it. And and also all the things that we have done in India, like Indo-Pacific, that is going to be decisive in the battle against anything that China does. No, very well said actually. और viewers should also research दृष्टिकोण का newsletter, उसको जरूर पढ़िए, because he does lot of interesting findings like these in his newsletter. बहुत मेहनत करते हैं
कभी कभी हमारा शो भी इनके शो से इंटरफेयर कर जाता है, इनका मेहनत से। सो एक लास्ट क्वेश्चन आता है, बड़ा हम्म, इंपॉर्टेंट है, कि नाउ द इंडियन आर्मी इज बीन प्रिपेयरिंग फॉर टू फ्रंट वॉर, एंड अमेरिकन डिसीजन मेकर्स ऑल्सो, उनको सोचना चाहिए कि अभी तो उनको हिंदी समझ में आती है, मोस्ट स्टेट डिपार्टमेंट पीपल लर्न हिंदी, सो मैं हिंदी में बात करूंगा तो उनको समझ में भी आएगा, कि उनको सोचना चाहिए कि ज्यूज और हिंदूज, उनको क्लब किया जा रहा है इस्लामिक वर्ल्ड में टू बी टारगेटेड, बिकॉज दिस इज Jews and Hindus are the only community other than the non-religious Western world, नॉट रिलीजियस, हम्म, रिलीजियस वाले तो वैसे ही बैकवर्ड है, वो भी ऊंट की सवारी के लिए तैयार है। जो नॉन रिलीजियस वेस्टर्न वर्ल्ड, जो चर्च नहीं जाते, दे आर द स्मार्ट पीपल। तो दोज पीपल एंड हिंदूज एंड ज्यूज, मतलब जो लिबरल्स, हिंदूज एंड ज्यूज आर द मेन टारगेट ऑफ ऑल दीज लॉबीज कमिंग फ्रॉम मिडिल ईस्ट। और अमेरिका का बिगेस्ट अला है कतार। तो कतार ने हम्म। हमारे 8 सोल्जर्स को जो स्पाई के लिए एक्यूज किया, कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे वो बात मुझे पता नहीं, नो बडी नोज, इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोबेबली डजंट नो। लेकिन उनको जो अरेस्ट किया और उस पर डेथ सेंटेंस दे रहा है, और इंडिया कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो व्हाट यू थिंक ऑफ, व्हाट इज द वीकनेस अभी इस समय? हम जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी की दाद देते हैं, लेकिन कतार में क्या हो रहा है? Ah, how West and Islamic world has worked together. That's a very interesting story. Actually, मैंने इस पे अभी recently एक आर्टिकल लिखा था, लाइक अपने दृष्टिकोण.com पे, तो वो आप जरूर पढ़िए। दैट व्हेन आई वाज डूइंग माय ओन रिसर्च, मेरी आंखें खुल गई। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि ये इस हद तक गया होगा। सो लेट मी गिव यू सम लाइक इंफॉर्मेशन। यू नो, 1928 में एक इजिप्ट में एक स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर होते थे, उनका नाम था हसन अल बन्ना। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, उसका नाम था मुस्लिम ब्रदरहुड, राइट। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये MI6 की बैकिंग से शुरू हुई थी 1920s में। एंड जो वहाँ एक और वो थे, हज अमीन जो थे, he was actually Nazi leaning anti-Semitic, and he was backed by the MI6, and he was the one who was in the founding of the Muslim Brotherhood. So हुआ क्या कि जब नाजीज्म जब शुरू हुआ, तो not many people know actually that, like, one of the things that the Nazis did was to co-opt the Islamic organizations against the Soviet Union. उनका ये था, उनका ये सोचना था कि जो रशिया के जो एथनिसिटीज हैं, स्पेशली द इस्लामिक एथनिसिटीज, माइनॉरिटीज जो हैं, उनको वो कॉप्ट करेंगे एंड दे विल यूज अगेंस्ट देम। एंड दे वर डूइंग क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली तातार्स एंड चेचेन्स एंड कजाक्स एंड उज़्बेक्स, उनको वो यूज करना चाहते थे। So during, you know, they would actually they recruited a lot of captured Soviet soldiers, you know, this German army जो था, and all of them were actually Muslims. ये NPR में एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था जहाँ पर उन्होंने ये शेयर किया था। And when actually Hitler lost in World War II, all these this organization that they had created was taken over by CIA and BND, which was the West German Foreign Intelligence Agency. So the Muslim ex-Soviet agents they were all recruited by CIA, and उन्होंने वहाँ एक रेडियो लिबर्टी स्टेशन शुरू किया म्यूनिक में। एंड लेटर ऑन 1958 में म्यूनिक में ही वेस्ट जर्मन गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक मॉस्क खोला, which was the center for Muslim Brotherhood, from where the whole thing started. And वहाँ पर एक बंदा था, Said Ramadan, who was actually the one who set everything up. Now this Said Ramadan went over to Pakistan and he was a leader of Muslim Brotherhood, and there he went and created the push
for Pakistan to be an Islamic state, first and foremost, ये तो सब इजिप्ट से रिलेटेड थे. मुस्लिम ब्रदरहुड, हसन अल बन्ना, उनके एक और सक्सेसर थे, लाइक इन टर्म्स ऑफ लाइक इंटेलेक्चुअली, सैयद कुतुब एंड सईद रमादान जो थे. एंड देन ऑन द पाकिस्तान साइड, जिनको ये लोग अलामा इकबाल बोलते हैं, जिनका वो सारे जहाँ से अच्छा गाना हम सब गाते रहते हैं, वो जो अलामा इकबाल थे, लाइक दैट मोहम्मद इकबाल, ही एक्चुअली इनवाइटेड दिस गाय मौलाना मदूदी टू राइट द commentaries on Quran. Those commentaries have become the basis uh, for all the madrasas and all the radical Islamists that come out of Pakistan. You know, Al Huda Foundation जो है, जो पाकिस्तान में भी है, कनाडा में भी है, these guys follow the same curriculum, use the same books that Maulana Maududi had written. Maulana Maududi had meetings with Sayyid Ramadan as well as other people from the Egypt side. So they were linked in many ways. That what Hassan al-Banna did, Sayyid Qutb did, and what Maulana Maududi did, that created the bedrock for all Islamic terror, like terrorism and jihadism in the 20th century. And that entire thing, वो तो उसके बारे में तो पूरा evidence है ही about the Muslim Brotherhood being backed by first by MI6, then by Nazis, and then by CIA and the Western German intelligence and MI6 again. So वो तो evidence is everywhere. It's documented, like very well like researched. But we also know from India that CIA was also backing ISI. ISI was created in 1950. 1948. The guy who created ISI was actually a British guy with Australian background. One of the things, its mission statement that he actually gave ISI was to use the fault lines in India to divide India and to break India. That was a mission that he gave to ISI. So अगर हम देखें ऑल द वे, अगर हम जाएं पीछे और देखें कहाँ से शुरू हुआ था ये पूरा सफ़र, तो हमें समझ में आएगा कि actually Western intelligence was behind the entire Islamist movement, the jihadism, because they use them as tools. ईरान में जीतने के लिए they use them as tools. इंडिया को हमेशा दबाने के लिए they used them as tools. अफगानिस्तान में जीतने के लिए they used them as tools. And when they wanted it, they actually went and destroyed them. जब उनको लगा कि हाँ इनका काम हो गया, साफ कर दो. अफगानिस्तान पूरा साफ, इराक पूरा साफ, ईरान को ये साफ करना चाहते थे, हुआ नहीं. So it's like हम अपना एक टूल छोड़ देंगे, वो अपना काम करेगा, फिर उसको साफ कर देंगे, वो सफाई कर देंगे. तो बेसिकली इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द वेस्टर्न intelligence agencies and Western forces have been the frontline actors whom they use against a society and country that they want to destabilize. So that is how it has been used. So इंडिया के खिलाफ जो ये फ्रंट जो खुला हुआ है, जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का है, जो जिहादिज्म का है, that is the reason why it can't be like put down, because it not only has the backing from the Middle East, Qatar वगैरह से, but that also has a backing from the Western intelligence organization and now China as well. So so it is a very tricky thing. So wo Hindus who are saying a whole lot of things against Modi, I know even now वो पाकिस्तान की जो टीम वहाँ गई थी अहमदाबाद में, वो डांस कर रही थी लड़कियां, अरे हम क्यों वेलकम कर रहे हैं इनको. There was a reason why we are doing all that, because there are you should those people should watch
द प्रोग्राम इन पाकिस्तान जो चल रहे हैं, टू सी के हाउ दिस मे एक्चुअली फैक्टर इन इनटू द कंफ्यूजन विद इन दैट सोसाइटी इटसेल्फ. सो ये जो कुछ भी एक्शंस हो रहे हैं, दे नीड टू बी कैलिब्रेटेड वेरी 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 केयरफुली. दोवल, अजीत दोवल, मोदी जी एंड अमित शाह से ज्यादा हम नहीं जानते इन सब चीजों के बारे में. And none of us, I'm telling you, none of us know as much history, as much details of the whole, uh, danger that India faces, that Hindus face, than these guys. If Modi ji loses this election, mark my words, I've been telling again and again that there'll be a reprisal against all Hindus, not just in India, but everywhere else, even US and UK, because those organizations would have infiltrated all these Hindu organizations everywhere, and there will be very bad reprisal against all the Hindus. And India's economy, India's infrastructure will be destroyed. UPI will be destroyed. Things like this will happen. क्योंकि अगर हम देखें, मतलब मैं कोई ऐसी कहानी नहीं बना रहा. लाइक आफ्टर द पार्टीशन, व्हाट हैपेंड इन इंडिया, how Nehru used the killing of Gandhi, the assassination of Gandhi, against the Hindus. That everyone knows how much of repression that happened against all the RSS people. अगर आप सिर्फ एक कभी प्रोग्राम भी कभी आपने अटेंड कर लिया था किसी RSS का, you would lose your government job. And that was the situation. That was the kind of repression that happened. The same thing will be, same tools will be used to destroy the entire Hindu culture. जो वो किताब जो थी ना, वो 2611 RSS की साजिश, जो हम तब बच गए, हम अब नहीं बच पाएंगे, क्योंकि this election will be actually the fourth battle of Panipat, in my view. अमेजिंग, अमेजिंग. दिस पूरे सेशन में आई थिंक जो लोग, इसीलिए हमारे शास्त्रों में बोलते हैं कि डोंट क्रिटिसाइज टू मच, उसको बोलते हैं ईर्ष्या, और डोंट प्रेज टू मच, उसको बोलते हैं पाखंड. दोनों साइड से वी हैव टू बी बैलेंस्ड, है ना. Right. एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म बैलेंस करिए, बैलेंस तो करना ही चाहिए. हेल्दी अपोजिशन के लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी वॉइस उठानी चाहिए, वही लोकतंत्र है. लेकिन आपको वो भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप एक्सट्रीम सिचुएशन में जाएंगे प्रेज में, वो भी प्रॉब्लम है, एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म भी प्रॉब्लम है. दोनों से बीच में रहेंगे तो इट्स बेटर. देन यू कैन सी बोथ साइड्स क्लियरली एंड पिक अप व्हाट यू वांट. Right. मेरा एक आर्टिकल पढ़ेगा, वी आर नाइदर लेफ्ट नॉर राइट, वी आर धार्मिक. ना हम लेफ्ट में ज्यादा है, ना राइट में हम धार्मिक है, हम दोनों साइड से अच्छी चीजें उठाते हैं, है ना. Right. और जहां भी उसको मिले, एंड दैट इज द विजडम. और बैलेंस रखना ही उसी को योग बोलते, समत्वम योग उचिते. अगर हम योग की बात कर रहे हैं तो बैलेंस रखना जरूरी है. तो और आई थिंक दिस वीडियो पीपल मस्ट हैव गॉट मेनी स्ट्रेटेजिक इनसाइट. देश कपूर जी, थैंक यू सो मच. Thank you. अच्छा हुआ हम लोगों ने डिस्कशन किया, क्योंकि वो लास्ट सेशन जो हमारा द 5 था, उसमें दिस योर पॉइंट्स वर स्टक इन माय माइंड, क्योंकि यू ऑफर्ड समथिंग डिफरेंट देन एवरी अदर पैनलिस्ट इंक्लूडिंग मी. एंड Thank you. एंड दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कैच, कि तीसरा विश्व युद्ध दिखेगा नहीं, लेकिन हो रहा है. हाँ. थैंक यू ऑल. अभी लोग फेस भी कर रहे हैं, इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है अमेरिका में, मतलब अनडिस्क्लोज तो बोलेंगे 18 to 21% लोग बोलते हैं 3-4 साल में. Global debt is at the highest, 300 कितने 20 trillion dollars. और So yeah. जिस दिन अमेरिका डेट पे नहीं कर पाएगा, वो यही सब काम करने वाला है, क्योंकि उसको अपना इंडस्ट्री बचाना है. सही बात थैंक है. यू ऑल सो मच, Thank you. एंड थैंक यू ऑल द व्यूअर्स. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब को बताइए, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट शो. नमस्ते. Namaste.